बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARS एजुकेशन। ये वीडियो FSC केमिस्ट्री सेकेंड ईयर इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस पे बनाई जा रही है, जो कि तमाम पंजाब बोर्ड के लिए यकसां फ़ायदेमंद है। अगर आप चाह रहे हैं कि कम वक्त में आप बहुत अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप इंशाअल्लाह मैक्सिमम मार्क्स लेंगे, ये हमारा दावा भी है। और हमारी 9th-10th की सक्सेसफुल जो गैस एंड पेयरिंग स्कीम है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की, उससे आप ये देख भी सकते हैं कि हमारी मालूमात किस हद तक अथेंटिक होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो दोनों बायो और केमिस्ट्री के एक्सपर्ट टीचर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट में अरसा दराज से पढ़ा भी रहे हैं, और हमें दिलचस्पी होती है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कम मार्क्स की वजह से परेशान हैं, अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए हम ये एनर्जी सर्व करते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। तो हम शुरू करते हैं आपका टाइम ज़ाय किए बगैर। इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री तमाम पंजाब बोर्ड के लिए, और इसको कंपाइल किया है सर अंसर अब्बास, जो कि सुपीरियर कॉलेज कोतवाली रोड फैसलाबाद में काफ़ी अर्सा से एज आ लेक्चरर काम कर रहे हैं, और इसके साथ थोड़ी सी काविश मेरी भी है। और इसी तरह अब हम शुरू करते हैं जी। चैप्टर नंबर 1, पहला इसका शार्ट क्वेश्चन है जी, राइट डिफेक्ट्स ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। सेकेंड वन है जी, इम्प्रूवमेंट एंड इन मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। ऐसे ही नेक्स्ट है, जिंक, कैडमियम, मरकरी वर प्लेस्ड विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स in Mendeleev periodic table. How this confusion is removed in periodic table. Fourth short question, define Mendeleev and modern periodic law. Fifth and more important is why atomic radius decrease from left to right within a period and increase from top to bottom down the group. Next, why the size of cation is always smaller than its parent atom. 7. Why the size of anion is greater than its parent atom. 8. Question is, define ionization energy, give its strength across a period and down a group. 9. Question, why second ionization energy value is greater than its first ionization energy value. Next is, why the second value of electron affinity of element is usually shown with positive sign. इसको दूसरे अंदाज में यूँ भी पूछ सकते हैं कि why first electron affinity is negative and second is positive. Why is the oxidation state of noble gases usually 0? Why diamond is conductor of electricity while graphite is good conductor? Define hydration energy and justify its order in aluminium, magnesium and sodium ions. What do you mean by lanthanide contraction? What are amphoteric oxide and justify zinc oxide is in amphoteric oxide? Why Na2O is basic while SO3, P2O5, these are acidic in nature. Define hydrides, halides and oxide. Write is type example of each. इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, but is more important is 18 question, that is PbCl2 is mainly ionic but PbCl4 is fairly covalent. Why? These 18 questions from chapter number 1 are most important. By doing this, you can attempt questions, short question asked by examiner in any of Punjab boards. Now we move toward chapter number 2. Let's see the questions, short question of chapter number 2, that are
Write the chemical formula of chili, saltpeter, salvite, dolomite, asbestos, halite, natron, beryl and phosphorite. इनमें से कोई भी फार्मूला पूछा जा सकता है. ऐसे ही why sodium stored in kerosene oil, why Na2CO3 gives alkaline solution in water, write equation. Why CO2 is used in breathing equipment for mountaineers and its spacecraft. Justify that beryllium oxide is an amphoteric oxide. इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि give the reactions of beryllium oxide with bases and bases. Why is calcium chloride added in molten NaCl in dawn cell? Write down the advantages of dawn cell. And more important is more problems faced during working at a flame cell. How plaster of Paris is formed, give its uses. Next, why 2% gypsum is added in cement? What are cement plaster and hard finish plaster? What is meant by dead burnt plaster? What happens when lithium carbonate is heated? Why lime is added to stick soil? How lime water is prepared? Why does lime water turn milky with CO2 but become clear with excess of CO2? These are the 16 questions that are very important according to exam point of view. Now we move towards chapter number 3. That is chapter number 3 of why CO2 is stick in nature, why CO2 is gas, why at room temperature, why SiO2 is a solid. What is vitreous silica? Alright, its uses, almost 2 uses. Give the properties of and uses of boric acid. Next is give the equation. Borax is heated with a calcium oxide. ये tapping mistake है यहाँ पर. And aluminium oxide is heated with NaOH solution. Next is what is action of aqueous solution of borax on litmus. Next is how does borax act as a water softening agent. Write the names and formulas of different acid of boron. How does orthoboric acid react with a sodium hydroxide and ethyl alcohol? Write formula of talc, zircon, asbestos. What are silicates? Give their uses of sodium silicate. What is chemical garden? More important question is chemical garden. How weathering of potassium feldspar take place? Explain with the help of chemical equation. What is asbestos? Give its uses. What are silicons? Write 2 uses of silicons. What is effect of temperature on viscosity of silicons? Define semiconductor. Give one example. What is effect of temperature on semiconductor? What is litharge? Give its chemistry. Why aluminium is said to be corrosion free? How aluminium react with halogen, oxygen, acids and bases. Write down 4 uses of aluminium. CO2 is non-polar while CO is polar. कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड की कि वो पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है, तो डाइपोल मूवमेंट का यहाँ पे आपने जिक्र कर देना है. ये चैप्टर नंबर 3 के मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 23. अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ. स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 के अंदर राइट 4 डिफरेंसेस ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम इट्स फैमिली.
What is laughing gas? Why is it called so? इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? Justify that N2 is water of combustion. Give the method of preparation of PCl3. P2O5 is a wonderful dehydrating agent. NO2 is strong oxidizing agent. Give example. Write or describe ring test for the conformation of nitrate ion in a solution. What is meant by fuming nitric acid? What is aqua regia? How does it dissolve noble metals? Give 4 uses of nitric acid. Write down 4 similarities and 4 dissimilarities of oxygen and sulfur. Oxygen is a gas while sulfur is solid. Give advantages of contact process for the manufacturing of sulfuric acid. SO3 dissolve in H2SO4 and not in water. Why? Write 4 physical properties of sulfuric acid. Sugar turn black on addition of concentrated sulfuric acid. Give 4 uses of H2SO4. Also tell me why H2SO4 is called king of chemical. Effect of temperature on N2O4 and O2. How nitrogen differ from other member of its group. These are the questions which repeatedly asked by examiner in annual or in second annual or first annual examination of chemistry FSC part 2. Now we move toward the chapter number 5. Chapter number 5. Question: give reason that fluoride is a gas and iodine is a solid. Why fluorine show peculiar behavior? Give 4 reasons. Why iodine has metallic luster? Why HF is a weaker acid than HI? No. Next is HF is less viscous liquid than water. Halogen, how halogen acids are iodized in water. What are disproportionation reactions? Give example. Name any 2 methods to manufacture bleaching powder. Also give reaction for this. Give reaction of bleaching powder with excess of H2SO4, NH3, CO2, HCl. What do you mean by available chlorine? This is very important. How can we calculate this? Bleaching powder loses its bleaching property when kept in an open bottle for a long time. What is bleaching powder and write its any 4 uses. What are freon, teflon and halothane? इन दोनों में freon, teflon बहुत पूछा जाता है. What is iodized salt? Write 4 applications of noble gases. These are only 15 questions which are more important from chapter number 5. Now move toward chapter number 6. Continue. What are topical and non-topical transition elements? The melting and boiling points of zinc, cadmium and mercury are low. Why? Difference between paramagnetic and diamagnetic substances. Why most of transition elements form colored compound? What are interstitial compound? Write down its different characteristics. What are substitutional allies? Explain the following terms giving example. Ligands, coordination sphere, coordination number, central metal atom and chiliad. More important these terms are. Give systematic name of following compound that are showing to be on screen. You can also take screenshot for your
easiness. Now we move toward next question, that is write carbon content in pig rot and cast iron. Cast iron, what is percentage of carbon in different type of steels? How do you remove the entrapped gas from steel? What does damage in plated iron get rusted quickly? Under what condition does aluminium corrode? What do you mean by galvanizing, or we can say it's sacrificial corrosion? What dichromates are more powerful oxidizing agent? Prove the truth of this statement. Write the equation of chromyl chloride test. These 16 questions are very important. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे एंड होती है. अब हम छोटी सी ब्रेक के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं. Next is chapter number 7. What is thermal cracking? Give one example. What is meant by knocking of petroleum? Write the IUPAC name and formulas of isomers of CH4. Next is how coal is formed. What is catalytic cracking of petroleum? What is vital force theory? How it is rejected by Buller? Define homocyclic and heterocyclic compounds. Mention shapes, angles of ethane and ethine. Define tautomerism, functional group isomerism. Give its examples. What is octane number? How it can be improved? What are alicyclic and aromatic compounds? Give example in each case. Define reforming of petroleum. अभी थोड़ी देर पहले ही फंक्शनल ग्रुप का पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे आइसोमेरिज्म नहीं बल्कि फंक्शनल ग्रुप है, और कम से कम 2 ऐसी एग्जांपल देनी है जो कि ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हूँ. और इसके अलावा नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, एक्सप्लेन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट है जी डिफाइन टॉटोमेरिज्म. Next, 2 butene show geometric isomerism, but 1 butene does not. Why there is free rotation around a double bond but free rotation around a single bond? ये बहुत अहम क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी है और पूछा भी जाता है. तो ये कुछ क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 के मोर इम्पोर्टेंट. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 की तरफ. How do you distinguish between 1 butane and 2 butane? ये एक टेस्ट के जरिए आपने हल करना है. What is Benzene nickel? Write its preparation and reaction. Why ethane is an important industrial chemical? What is Wolff and Clemenson reaction? How mustard gas prepared? Write its use. How synthetic rubber prepared? What is Sabatian-Sandron reaction? Hydrogenation हो सकती है alkene और alkyne की. How will you prepare acetic acid from acetylene? Alright, mechanism of ozonolysis of alkene.
How oxalic acid is prepared from alkyne? Mention four uses of ethane, ethene, and ethine. State Marconi-Cove rule. Mechanism of cool electrolytic method for alkane. Convert methane into formaldehyde, nitromethane. Give four uses of methane. What is Bayer test? How cis and transalkynes alkenes are produced? We can say Lindral and catalyst and liquid ammonia. Next is why sigma bond is inert. How alkanes are called, why alkanes are called paraffins and alkene are called as olefins. Next is explain the reactivity of alkane, alkene and alkynes. Now we move towards chapter number 9. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा चैप्टर है जी. स्टार्ट लेते हैं इसका. राइट जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction in benzene. Convert benzene into cyclohexane, maleic and hydride. Give two reactions that state chain structure of benzene ruled out. Briefly describes X-ray studies of benzene. Right objection to cacoylase structure. What is trinitrotoluene? How it is prepared? Define resonance and write down resin structure of benzene. How will you prepare the following compound from benzene in two steps? Metachloronitrobenzene, parachloronitrobenzene. What is words fitting reactions? Write an example. What is aromatization? Give two examples and write the conditions. Or give mechanism of nitration and sulfonation of benzene. What happens when benzene is burnt in free supply air? Give equation. Write two laboratory methods from which benzene can be prepared. How benzene can be converted to acetophenone? Give mechanism, that is acylation, Friedel-Crafts acylation. What is alkylation of benzene? This was chapter number 9, which is very important. और याद रहे स्टूडेंट्स कि हम इंशाल्लाह ये जो शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनमें से पेपर में आने हैं उनके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे. कोशिश करें कि आप लोग उस वीडियो को भी लाजमी देखें ताकि आपके शॉर्ट का और लॉन्ग का मसला हल हो सके. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10. What are elimination reactions? Give mechanism of E2 and E1. Define nucleophile and electrophile. Give one example in each. What is word synthesis? What is the nature of carbon magnesium bond in RMGX? What is SN2 and SN1? Right mechanism. SOCl2 is the best reagent to get alkyl halide from alcohol. Right equation including solvent also. यहाँ पे solvent नहीं लिखेंगे, एक नंबर यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, तो ख्याल रखना है solvent का जिक्र लाजमी करिएगा. Next, give reactions of Grignard reagent with CO2 followed by hydrolysis in acidic medium.
ये ग्रीनआउट के रीजेंट में से पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग ग्रुप, गिव इट्स टाइप्स एंड एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिविंग ग्रुप। Prepare primary secondary tertiary from following Grignard reagents. How anti-knocking agent prepare from alkyl halide. स्टूडेंट्स ये थे बहुत ही अहम क्वेश्चंस, 10 सिर्फ चैप्टर नंबर 10 से चूज़ किए हैं, इसलिए इनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। राइट डाउन स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, carbolic acid, lactic acid, picric acid, and sodium phenoxide. Sodium methoxide, glycerol, 2-butane, taric acid, and vinyl alcohol. How wood separate is prepared from water gas? Define fermentation, write its essential condition. Only 14% alcohol can be prepared by fermentation process. Why? Define absolute alcohol, methylated separate, rectified separate, and denaturing of alcohol. Water has high boiling point than ethanol. Why? Ethanol has a higher boiling point than ether. Ethyl alcohol is liquid while methyl chloride is gas. Why? Ethanol give different product with concentration, different condition. Why? How Lucas test is used to distinguish between primary, secondary, and tertiary alcohol. How will you distinguish between methanol and ethanol? This is done by iodoform test. Write any 4 uses of methanol, ethanol. How phenol is stick? Why phenol is much more stick than alcohol? Describe a method for preparation of phenol from sodium salt of benzene sulfonic acid. How phenol is prepared from chlorobenzene dose method? How will you prepare picric acid backlight from phenol? Explain Williamson's synthesis from ether. Give chemical reactions of diethyl ether with HI and PCl5. And now we move to our chapter number 2. How formalin is prepared on commercial large scale, write its uses. How iodoform is prepared from ethanol and acetaldehyde. A reaction for the formation of acetal. A reaction to produce hydroxy acid या lactic acid from aldehyde. What is Fehling solution test to identify aldehyde? Justify Cannizzaro reaction self-oxidation reduction reaction. How? What is Tolling test? How iodoform test can be used to distinguish between methanol and ethanol or methyl ketone and other ketones. General mechanism for acid catalyzed reactions. General mechanism for base catalyzed reaction. General mechanism for ammonium derivative. Mechanism of sodium borohydride. Prepare acetaldehyde acetone from didistillation method. Give 4 uses of formaldehyde and acetaldehyde. This is very important. ये थे जी चैप्टर नंबर 12 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और चैप्टर शुरू करने से पहले एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 13। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 13 में जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। व्हाट आर फैटी एसिड्स, हाउ एसिड क्लोराइड्स आर मेड बाय देम, व्हाट डू मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर्स,
Differentiate between acidic and basic amino acids. What is acidic and basic nature of amino acid? How will you convert acetic acid into acetamide? How will you convert acetic acid into ethyl acetate? How will you convert acetic acid into acetyl chloride? What is peptide bond? Write its formula of a tripeptide. Define neutral amino acids with examples. Write formula of glycine and alanine. How amino acid is prepared by Stricker synthesis. How carboxylic acid are converted into amino acids. What is difference between essential and non-essential amino acids? What is glacial acetic acid? This is more and more important question. How will you prepare the acetic anhydride? ये चैप्टर यहाँ पे एंड हुआ. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ. दैट इज चैप्टर नंबर 14. स्टूडेंट्स याद रहे कि अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो उसमें ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि इनमें कोई भी आपने क्वेश्चन मिस नहीं करना. अगर आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन मिस कर देते हैं तो फिर मुश्किल है कि आप हमारे मार्जिन तक पहुंच पाएँ, क्योंकि पहले हम सिलेक्टिव चैप्टर, फिर हम सिलेक्टिव जो है वो क्वेश्चन इन पे आ रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें जो क्वेश्चंस बताए जाते हैं एक्सपर्ट के आरा के बाद, मशवरे के बाद, उनको हमने बिल्कुल 100% करना है. ये बात आपके जहन में होनी चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इतने अच्छे मार्क्स गेन नहीं हो सकेंगे. इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 की तरफ. व्हाट आर पॉलीमर्स? हाउ आर पॉलीमर्स क्लासिफाइड? हाउ डिग्री ऑफ polymerization help to determine the molar mass of polymer? Define homopolymer, copolymer and terpolymer. Give example of each. What are thermoplastic and thermostatic polymers? What is additional polymerization? Give example. Explain with example the term condensation polymerization. How PVC and polystyrene is prepared? Give its uses. Write uses of polystyrene. What are acrylic resins? Give their two uses. Define epoxy resins. Give their importance. Write a note on polyester resin. More important is what is nylon 66? Give the formation of nylon 66. Next, what is difference between glucose and fructose? Give its structure also. What are polysaccharides? What is starch? Difference between amylose and amylopectin? What is glycogen? Give its properties and tell me that glycogen is called animal star. Why? What is denaturation of protein? What is true importance of protein? What are lipids? Give example and write its characteristics.
What is ponification number? Give one example. What do you mean by rancidity of fats and oils? What is iodine number, acid number of fat and oil? What is steroid? Give the structure. What is cholesterol and write down the structure of cholesterol. Difference between DNA and RNA. Now we move the last chapter 15. यहाँ से हमने skip कर दिया है जिससे आपको नज़र आ रहा है 14 के बाद हम 16 पे जा रहे हैं. उसकी ख़ास ज़रूरत नहीं याद करने की इसलिए. Define environmental chemistry. Name the component of environment. What is meant by hydrosphere? Give two examples of each source. What is lithosphere? Difference between biosphere and ecosphere. Define environmental pollutant and difference between primary secondary pollutant with example. How CO is poisonous gas, why the effect of CO on human health. What is acid rain, right its effect. What is smoke, what is essential condition for smoke formation. Difference between reducing and oxidizing smoke. What is ozone layering. What is ozone layering depleting the harmful effect. How oil spill is affecting marine life. What is advantage threat to aquatic animal life. What are plasticide target steps. What are leather trenches pollute water. Explain what is meant by DO and check how we can check the quality of water. What is BOD and COD? Explain purification of water by use of coagulating agent. Write the harmful effect of chlorination of water. What is landfill? What are leachates? What are recycling of plastic is done? What is reprocessing? What is depolymerization, transformation? What is incineration and what is side effect, advantage and disadvantage? What do you mean by aeration of raw material? Discuss livestock waste as a water pollutant. स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन. अब मैं दोबारा आपको एक दफ़ा पूरी स्क्रीन दिखाता हूँ एज अ रिव्यू. इसमें आप क्वेश्चन में स्पीक तो नहीं करूँगा लेकिन ये है कि इसको देखने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस को अच्छे से भी कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस पूरे नहीं हो रहे आपके पास और आपको कंपाइल में प्रॉब्लम आ रही है देन इजी वे ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद आप हमें स्क्रीनशॉट भेजें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे और हम आपको PDF भेज देंगे जिससे आप लोग इजीली पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस को देख सकेंगे, बार बार प्रिंट आउट करवा सकेंगे और उसके बदले में हम आपसे ही वीडियो की डिमांड करते हैं कि इसको पूरा देखें. इससे हमारी हौसला अफजाई होती है. और ऐसे स्टूडेंट्स या आप लोग अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही आपको बायोलॉजी सेकेंड ईयर के भी जल्द शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसके बाद फर्स्ट ईयर के होंगे इंशाल्लाह. तो इन तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े भी रहा करें, हमारी हौसला अफजाई भी क्या करें. आपके लाइक, कमेंट, शेयरिंग एंड वाचिंग से हमारी हौसला अफजाई होती है. तो आपकी हौसला अफजाई यकीनन हमें इस काम से जुड़ा रहने की तौफीक भी देगी और साथ ये है कि हम इस पर मज़ीद एनर्जी से काम करेंगे. मैं एक दफ़ा पूरी बुक को एज अ व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, आप लोग इजीली देख सकते हैं.
स्टूडेंट्स, तो पहले मैंने बार बार क्वेश्चंस को पढ़ा और पढ़ने के बाद दोबारा जो है वो आपको एक दफ़ा स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दिया। लेकिन अगर आपके लिए ये भी मुश्किल बन रही है तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करें। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी PDF मुहैया कर दी जाएगी। उससे हमारी हौसला अफजाई भी हो जाएगी और आपका फ़ायदा भी हो जाएगा। दोस्तों, ये जो सवालात हैं ना, सिर्फ शार्ट नहीं हैं, बल्कि यूँ समझ लें कि शॉर्टकट हैं, आपके शानदार नंबरों के लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो पर हर सब्जेक्ट के लिए बनाएं, मीन बायोकेमिस्ट्री के लिए और अदर सब्जेक्ट के लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा देखो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। और किसी भी किस्म के मसले के लिए आप हमारे चैनल के किसी वीडियो पे कमेंट करें। इंशाल्लाह हम आपको जो परेशानी होगी वो आपके हल करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।